Good evening, ladies and gentlemen. Myself, Qadeer Nawaz. My qualification, let me tell you about it. I'm a chartered accountant, and I've done my training from Yakub & Co. Chartered Accountants. And I joined Edify Group of Companies in February this year. And there is a very interesting question which I have been quite asked many times. Sir, you are a chartered accountant. What are you doing in a student visa firm? So I think some of you might be wondering that what is my role here? Jahan finance, wahan hum. So I joined Mr. Azim Qasim's vision, which I would like to give credit. Please, huge round of applause for Mr. Azim Qasim, my CEO, my leader. Thank you. A story ऐसे start हुई कि when I joined, I was interested with the role of finance, taxation, and legal compliance. Then continuing therefrom, we were confronted with a very difficult task. My team, IMF, if anyone could help me forward the next slide, please. GT, GST, some of you may be very familiar with it. Lekin what we are doing differently here in GT, that I utilize my team's expertise on GT. This is the process flow, all that is not quite visible. Head of operations, Mr. Nasir Raza, is leading more of the compliance on GT, but my role is very crucial and specific, which comes when GT is being forwarded to the university. We call it RAEP, Registered Australian Education Providers. And we review the pack. And what we do on this, we deploy 3 audit procedures which are enunciated by international standards on auditing. Let me list them for you. Inspection, inquiry, external confirmation. I don't think that आप इतने familiar होंगे in terminology से. So let me walk you through. Inspection, which involves detailed evaluation and examination of the documents. Now what we do in inspection, for example, मैं एक SOP पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई experience mentioned है, तो हम क्या करेंगे कि let's go for the detail के experience उसका साथ में attached है, details उसकी देखेंगे कि beginning कब हो रही है, ending कब हो रही है. तो ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है which I highlighted in the bottom, which is not quite visible again. Professional skepticism involves a questioning mind and being alert to the conditions that may indicate that there exists a material misstatement. So we deploy a corroborative audit approach, and what it helps that if we find anything suspicious in there, then we move on to our next procedure, that is inquiry. Not that inquiry which is being done at police stations. We involve counselors and students that please give us explanation or clarification that why this contradictory information or inconsistency is there. So having done that, if we are not satisfied again, then we move on to external confirmation. External confirmation, audit में सबसे अच्छा evidence external confirmation ही होता है. Why? Because it involves third party and it is received directly to us. For example, you are very familiar with bank statement verification. Visiting card होता है आपके पास branch manager का, you write an email, email से आपको response नहीं आता, you try telephonic conversation, auditing standard भी accept करते हैं verbal confirmation को, तो हम उसका response record करते हैं कि manager ने हमें उसकी bank statement जो है वो verify कर दी है. एंड ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम ये 3 ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं. अब क्या होता है कि मेरे पास जीटी आती है तो मैं उसे रिफ्यूज़ करता हूँ या होल्ड पे कर देता हूँ, तो काउंसलर मेरे पास आते हैं, सर टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, इसमें लेवरेज है. मेरे पास 4-5 एग्जांपल्स हैं भी ऐसी कि जहाँ पे लेवरेज था कि जीटी पास हो सकती थी बाय यूनिवर्सिटी, बट आई रिफ्यूज़. देन पीपल गो टू CEO, सर कदीर ने फिर रिफ्यूज़ कर दी है, सर कदीर ने रोक ली है, आगे नहीं जाने दे रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है. बट मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है इम्प्लिसिटली एंड हाइडियसली फ्रॉम CEO कि आपने जो करना आप करें, ये जो कहते हैं आप इनकी नहीं सुने, और उनको कहते हैं नो प्रॉब्लम, आई विल हैंडल, आई विल लुक इनटू द मैटर. सो दैट इज़ वेरी
diplomatic approach of CEO. Please, again, a big round of applause for him. So, I have told you much about auditing. This is the GT pack offer letter. ऑफर लेटर पढ़ेंगे ना सबसे पहले कि उसमें कोई कंडीशन है कि नहीं है. काउंसलर्स नहीं पढ़ते नॉर्मली. वो सी के आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो ऑफर लेटर में इनिशिएटेड है वो मैच कर रही हैं. SSVF एंड अब इंटरव्यू भी आ रहा है. तो इंटरव्यू का क्या है, हमारा इंटरव्यू डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है. वी इंश्योर कि स्टूडेंट जो है उसका मॉक इंटरव्यू हो रहा है, इज प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू एक्यूरेटली एंड दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड. देयर इज proper audit trail for that. Financial documents verification, bank statement, again I have explained the procedure. Source of funds, we receive a bank statement, we evaluate credit side of the bank statement. For example, there are 15 million funds lying in the bank account. Where are those coming from? There could be multiple sources, so we go on to verify these sources. For example, Mr. A has deposited funds into the bank account. Then by default, Mr. A should be buyer of the property or commodity. Of course, if there is any anomaly, so of course, again, we go for inquiry and then from moving on therefrom to the external confirmation. Even if we cannot verify, we refuse it straight away because there is no compromise on quality as instructed by the CEO. So, source of funds and source of income. Source of income में क्या होगा कि आपके पास आएंगे. एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ बिकॉज ऑल द पार्टनर्स आर सिटिंग देयर, क्योंकि मुझे ये फेस भी करना पड़ता है कि मुझे पार्टनर्स को भी फॉर एग्जांपल मल्टीपल ग्रुप्स हैं, वहाँ कंप्लायंस के हेड बैठे होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कंपनीज जो होती हैं प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, उनके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होते हैं, स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इफ़ अ पर्सन इज ऑपरेटिंग एज अ सोल प्रोपराइटर और अ पार्टनरशिप फर्म, वहाँ पे हमें स्पेशल पर्पस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म लेने पड़ते हैं. फिर क्या होगा कि हम ऑडिट करवाएंगे, उनको कहेंगे कि आप किसी भी फर्म को अप्रोच करें. देन जो उन्होंने ऑडिट किया है जिस फर्म ने, उसकी भी क्रेडिबिलिटी चेक करनी है. इफ़ दैट इज़ रजिस्टर्ड विद ICAP, वो करेंगे. और फिर हम उसके बाद अगेन वही इंस्पेक्शन करते हुए एनीथिंग सस्पिशियस अपीयर्स, वी गो टू इंक्वायर देम, इंक्वायर द स्टूडेंट, इंक्वायर द काउंसलर. Even if we are not satisfied, then we directly write an email to the audit firm that please verify us कि ये आपने जो audited financials ये लेके आए हैं हमारे पास, ये ऑथेंटिक है. तो ये सोर्स ऑफ इनकम पे भी यही एक्टिविटीज़. टैक्स रिटर्न्स में FBR का पोर्टल है ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हैं कि किसी ने आपको टैक्स रिटर्न सबमिट किए हैं तो रजिस्टर्ड है विद FBR. मैं काफ़ी बोर कर रहा हूँ लेकिन दैट डिटेल इज़ वेरी नेसेसरी टू शेयर विद, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू आई हैव टू एक्सप्लेन इट to the all height of compliance from the groups, from the universities. Okay, so third party verification इसमें automatically हो जाएगी आपके पास if you are performing on FBR online portal. That is the game changer. CEO के साथ आज से कुछ 3 माह पहले मैं बैठा हुआ था और we were planning to implement an ERP, although we have an existing ERP which is operating flawlessly, but again to his vision, innovation, what differentiates among the market, what makes us stand out, technology adaptation, digital transformation. So we approached different ERP consultants and they suggested us, I was hoping for SAP HANA 4, but they suggested Odoo. They told us that Odoo is very flexible and very customizable, so you can tailor cut it to your industry's need because those are normally made for manufacturing industry. So we went for Odoo. Odoo हमने जब उसकी डेवलपमेंट शुरू की, मीटिंग्स हुई, तो हमने पहले इनिशियली कुछ प्लान किया था कि ये मॉड्यूल्स लेंगे. बट शेख साहब से फिर मेरी अगेन मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि बॉस मैंने Odoo को चेक कर लिया है, इसमें बहुत कुछ है, आप कंसल्टेंट्स हैं कि ये जो कुछ दे सकता है ना Odoo, हमें सब कुछ ही चाहिए, हमारे साथ लमसम पैकेज करें. तो ही इन्वेस्टेड ह्यूज इन दिस प्रोजेक्ट. अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास स्टूडेंट्स से लेके यूनिवर्सिटी तक everyone will be connected, every process will be seamlessly integrated into this, और हमारी इनएफिशिएंसीज, रिडंडेंसीज ये सारी एलिमिनेट होती चली जाएंगी. अगेन इस ओडू का मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके लिए शेयर कर रहा हूँ जो हमारे पास डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तरफ जा रहे हैं कि आपका स्टूडेंट एक दफ़ा साइन अप हो गया,
फिर सारा कुछ उसका सिस्टम के अंदर है। मैं काउंसलर से मिसाल देता हूँ कि आपने स्नीज भी सिस्टम के अंदर करना है, कोई आपने एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन है वो नहीं करनी। लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट विल बी इंटीग्रेटेड, सीपीयू के पास आएगा, सीपीयू ऑफर लेटर से हाईलाइट करेंगे कि ये कंडीशंस हैं, डिपार्टमेंट्स के पास उनकी विंडोज़ जा रही होंगी कि ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हमने इनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाना है, हमने इनको लैंग्वेजेस प्रिपेयर करवानी है, या फाइनेंशियल कंपाइलेशन है जिसमें हमारे पास जी फॉर्म हमारा अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है जिसमें हम स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसमें सारी चीज़ें जो है हमारी CRM के इर्द गिर्द घूमती हैं। CRM मैं आपको बता दूं, मे बी मैनी ऑफ यू आर फेमिलियर, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। Students are also clients, universities are also clients because they are third parties and connected with us. So we are working very heavily on that and investing in it. So we are connecting employees, going accounting and mobile application as highlighted by IFA earlier, mobile application for students and for the employees as well, कि ताकि वो खाना खाते हुए भी काम कर लें। Thanks for watching. Thank you so much. मैंने बहुत किया. Thank you so much.